Bias in slope, whatever we are calculating, is the parameter. किस क्या y इक्वल टू mx प्लस v में पैरामीटर क्या हुआ? m और c. And hyperparameter is how many iterations you need for this number of iterations. Then training data set. Hyperparameters can be changed. Parameters are not changed. Simple definition. The model can change, or you can say a model changes the parameters, but it does not change the hyperparameters because hyperparameters are set prior to the model. Prior to the training, the hyperparameters are set. So what are those hyperparameters? The number of epochs. Learning rate and all this. These are hyperparameters. Yes. Can we say that the color of the tiger is hyperparameter? No, that is a parameter. In fact, that is not a parameter, also it is a feature. It's a feature. Yes. So m and x is your color. Okay, now when you say y is equal to mx plus c, so x is the color of the tiger, m and c are the parameters. if we just store the features, like now we are checking the color of the tiger, whether it is yellow, white, or No, I'm coming to your point. See, when I say y is equal to mx plus c, this x is nothing but the features. Okay, so x is a color. So if I am taking a multi-linear, multiple parameters, so if I am going for a multiple parameter linear regression, so I say theta 1 x1 plus theta 2 x2 plus theta 3 x3 plus so on theta n xn plus theta naught plus theta naught. Okay, this is my equation for a straight line. Now in this case, these x1 y1 these x's are nothing but the features. कौन से features? Colors, color, number of eyes, edges, size, etc. कुछ भी हो सकते हैं features. Theta 1, theta 2, theta 3, theta n and theta naught are coefficients of these features. And what do they represent? Okay, they are parameters, but what do they represent? Constants हैं, ठीक है, but what do they present? मतलब if I increase the theta, then what is going to happen? weights for the features. Exactly, these are the weights for the features. And what is the meaning of weights? How does it contribute For determining the line of regression. ठीक है ना? So like for example, if I say I am going to a mall to buy a suit for myself. ठीक है, सलवार सूट for myself. So I will have certain features for my salwar suit. First would be color, second would be size, and third is suppose the brand. Which brand I am looking for? I have Vivo also, I have W also, I have Central also. Right? I have 3 brands. So for me, brand is very important. Right? I don't care for the color, and for me, size is also very important. अब झोला तो नहीं पहनेंगे. ठीक? So I have size and brand very important. For me, color I don't care. हरा नीला नीला जो दे दो, I am ready to wear. It should look nice on me. But the only thing is that brand and size is very important for me. So what I will do is I will make their coefficients very large. So I will say 20 size plus 30 brand plus 5 color is equal to my y. What is y? My choice of salwar suit. समझ आ गई बात? एकदम. So what are these? These are my coefficients, or you can say parameters. So these are the parameters which may change. ठीक है, अब उसने बोला यार तो ब्रांड में तो मिल ही नहीं रहा, थोड़ा सा इसको कम कर दो. अब हम suppose I get
W में उसमें ग्रे कलर के नोट पहने, ये वाइट ग्रे ऐसे ऐसे कलर्स दिए, तो मेरे को उसका पार्ट में जाना, तब क्या करूँ, कलर को थोड़ा कम करूँ या कलर को बढ़ाऊँ, ब्राइट को कम करूँ? Yes, W has very subtle colors. Viva has red, green, blue colors. So what I can do is, okay, it says I don't have very prominent colors, so let's make this as 15 and let's make this as 5. So I can do that at the time of modeling, training. So in the training, what actually we do is change these parameters. This is known as parameter. Okay, so the coefficients of your equations are known as parameters. So parameters are not features. ठीक है ना? So parameters are basically the importance that you are given to each and every feature, or you can call it as weights. So what is the weight that I am giving to? So all the weights are parameters. What are hyperparameters? Hyperparameters is number of epochs. Hyperparameters is number of epochs. How many times I want to run this node? In neural networks, how many nodes that I want to have? How many layers I want to have? What is the learning rate that I want to go for? These are all hyperparameters because they do not change at the time of training. जब हम ट्रेन करते हैं मॉडल को तब वो चेंज नहीं होते, समझ आ गई बात? ठीक है? So if somebody asks what is the difference between hyperparameters and parameters, so parameters do change at the time of training, and that is what exactly we are doing in the training, that we are trying to change the parameters, and hyperparameters are the ones which are kept constant before the training and they don't change throughout the training. But hyperparameters are very important to decide the accuracy of your system, because how many epochs that you are going to have will be directly proportional to your accuracy. तो हम epoch पे आए कहाँ से थे? Overfitting से आए थे. Overfitting से पहुँचते पहुँचते सूट के साइज को पहुँच गए. So where does this come from? कि when I said कि if you increase the number of epochs, then there are very high chances that you go for overfitting. Why? Why? If you increase the number of epochs, there are very high chances of going for overfitting. Because the modeling will try to learn each and every minute details. Because when you are trying, what is epoch? अगर हमने बोला तो हमें epoch का भी समझ में आया. That is all the iterations. So we are trying to learn the data during training. ठीक है ना? We are trying to learn the data during training. और फिर करते करते हम इतना ज़्यादा उसको learn कर लेते हैं कि that if you give me this, then only I can identify. Otherwise I cannot. ठीक है ना? Suppose you have been given images of Mussoorie, Shimla, Ooty. ठीक है? So you have identified how a hill station looks like. ठीक? So if you are given the image of Mussoorie, Shimla and Ooty, then only you will identify. अगर किसी ने दार्जिलिंग दे दिया तो तुमने बोला नहीं जी ये तो ग्राउंड है, because you have not been given that image. So you have learned it so well कि पहाड़ यूं ही जाना चाहिए. अगर पहाड़ यूं चला जाएगा तो बोलोगे जी ये हिल स्टेशन नहीं. ठीक? बात समझ में आ गई? This is what overfitting does. So आप learn करते इतना learn कर लेते हो that you have learned the data well. Another example can be like, suppose you have studied addition. This happens with kids a lot. If they have studied 2 plus 3 is equal to 5. ठीक है ना? They have studied 3 plus 2 is equal to 5 also. ठीक? अब उतना उन्होंने कर लिया. 2 plus 3 is equal to 5, 3 plus 2 is equal to 5. जैसे मैंने 1 plus 4 बोला है ये क्या होता है? ठीक? This is overfitting. Because you learned the data so by heart so well कि जिसको ना रटो मत यार, समझो उस चीज को. That is what overfitting is. या आपने रट लिया उसको समझा नहीं, you didn't go for pattern matching, you didn't go for anything, तो आपको बस येलो टाइगर मिलेगा तो आप पहचानोगे, पाइगर टाइगर नहीं पहचानोगे. क्लियर? या ऐसा बोले कि येलो टाइगर में चोट लगी तो नहीं पहचानोगे. Machine is not recognizing the features of the things. नहीं, it is recognizing the features. That's what I said कि येलो टाइगर में अगर चोट लग जाएगी तो वो नहीं पहचान पाएगा. येलो टाइगर पहचानेगा वो बहुत प्यार से. तो अगर आपको 2 plus 3 एग्जाम में देंगे you will get 100% मार्क्स. बट 1 plus 4 देंगे तो फेल हो जाओगे. हाँ, he has not understood the concept of addition. He
he has just learned 2 plus 3 is equal to 5 होता है, directly याद है। तो उसने वो समझा नहीं, उसने वो पैटर्न नहीं बनाया अपने दिमाग में। तो 2 plus 3 आएगा तो आप लर्न कर लोगे कि उसने लर्न नहीं किया। हाँ नहीं लर्न किया उसने, लेकिन ज्यादा लर्न कर लिया। ये ज्यादा लर्न करने पे हो जाता है। अगर आप आपको कम लर्न करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि कैसे एडिशन होती है। थोड़ा सा वैसा वाला एग्जांपल क्योंकि मैथ्स आ जाती है। मशीन लर्निंग इज नॉट मैथ्स। अगर 2 plus 3 5 है तो वो सारी एडिशंस कर लेगा। मतलब मशीन लर्निंग को मैथ्स में लगाया ही नहीं जाता। क्यों बताओ? क्योंकि वहाँ पे एक फिक्स नहीं है रिजल्ट है। हाँ न्यूमेरिकल डेटा नहीं न्यूमेरिकल डेटा से इसका कोई मतलब नहीं है। मैथ्स में वेरिएशंस भी आते हैं। उल्टा बोल रहा हूँ, मैथ्स में वेरिएशंस नहीं आते हैं। मैथ्स में वेरिएशंस नहीं आते हैं। जो एडिशन है वो फिक्स है, तो आप उसको प्रेडिक्ट क्या करोगे? अच्छा in when cases you use machine learning? In which cases you use machine learning? Predictions किस तरीके का? नहीं मुझे नहीं। तब मैं बड़ा है मशीन लर्निंग कब यूज करता है? एडिशंस में मशीन लर्निंग यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो फिक्स है, उसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है ऐसा होगा क्या। अब वो 2 plus 3 5 है क्या? ये नहीं है, 2 plus 3 5 ही है। So there is no prediction in addition. So we cannot apply machine learning in predictions, in additions. तो हम predictions में करें कल कैसा मौसम होगा। This is prediction. क्या? फ्यूचर प्रेडिक्शन सेल प्रेडिक्शंस हो जाती है कि कल मेरी कितनी परफ्यूम बिकेगी। बिजनेस इंटेलिजेंस। सो फ्रॉम द पास्ट। अच्छा वो चल रहा है क्या? इमेज रिकग्निशन अभी घुमा दी वो। अब आप घुमाते रहोगे? अरे बड़े अच्छे हो नहीं करना वो उनका टास्क है। नहीं हम याद करेंगे। तो कहाँ थे? हाँ, so machine learning is used in those cases in which firstly human cannot explain their expertise. अब इसका क्या मतलब हुआ कि I know I am doing it but I don't know how am I doing it. I can recognize your face. Next time when I meet you I will recognize you. कैसे किया मुझे भी नहीं मालूम. Yes, I don't know how I did it. ठीक है ना? If I meet his brother or sister, I will be able to identify. कैसे किया मुझे नहीं मालूम। एक तो उसमें in which humans cannot explain their expertise और दूसरा in which humans doesn't have any expertise. For example, stock prediction. आज 900 रुपए मार्केट बढ़ा, किसी को पता था बढ़ेगा? नहीं। इस समय मार्केट का बढ़ने का कोई तुक ही नहीं है, पर बढ़ रहा है। तो किसी ने उसको प्रेडिक्ट नहीं किया था एंड नोबडी कैन प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन कर सकते हो तो आप यहाँ नहीं बैठोगे, आप करोड़पति हो। सिंपल। तो जो बच्चे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन यूजिंग एसवीएम, उनका वहीं का वहीं खारिज कर दिया करो, क्योंकि इट कैन नॉट बी डन। इफ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट द मार्केट यू आर अ करोड़पति, यू विल नॉट बी सिटिंग हियर। Why are you here? Why are you here? Simple. If you can predict the price of Infosys tomorrow, then आज खरीदो कल बेचो and it will be a crore. So stock market is, and लेकिन उसमें machine learning लगती बहुत, सब लोग काम कर रहे हैं, all the experts are doing it and applying machine learning on stock predictions. But there are so many factors in stock predictions that you cannot even imagine what is there. बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी किसी ने नहीं सोचा था। कल जो रिजल्ट आया किसी ने नहीं सोचा था, सबने एनालिसिस सब कुछ कर लिया था। इफ दे वुड हैव थॉट कि बीजेपी जीतेगी तो आज पता होगा मार्केट भी बढ़ेगा, बिकॉज़ दैट इज ऑल लिंक्ड, करेक्ट। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट एज ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि अगर सपोज हम आपसे बोले पास्ट एक्सपीरियंस, तो आप मुझे बता सकते हैं एक हफ्ते पहले इंफोसिस का शेयर का प्राइस क्या था? आप बता दो। एक साल पहले नहीं बता सकते, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। बट सिस्टम कैन। So we apply machine learning in those places
where humans does not have any expertise firstly, secondly where humans cannot explain their expertise. मैथमेटिक्स में मशीन लर्निंग नहीं लगती, डेटा अगर बहुत कम हो तो मशीन लर्निंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। So image processing image is also one kind of matrix. It is a mathematical calculation we have applied by using the तो mathematical calculations. मतलब matrix calculation जो है addition subtraction. When do you apply calculations on images? Processing में प्रोसेसिंग के समय आप कैलकुलेशंस कहाँ करते हैं? प्रोसेसिंग के समय तो मुझे आपकी शक्ल पहचाननी है। So I will go for the pixel values. I'm not doing any calculations on those pixel values. That is on the features. I'm not doing anything on your face. I'm not applying any calculations on your pixel values. आपकी जो इमेज है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है, जैसा आपने बोला पिक्सल वैल्यूज है, तो पिक्सल वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं कर रहे। हम तो आपकी शक्ल पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फेस है, यहाँ पे आईज है, ये सब हम करेंगे। तो nothing is involved. I'm not doing any calculations on your image. I'm doing calculations internally using PCA or whatsoever so that I can identify your face. But I'm not making your eyes as yours. नहीं, I'm not making any modifications on the actual image. I'm trying to identify the image. That is image recognition. या इमेज में मॉडिफिकेशंस भी अगर हम कर रहे हैं तो एक्चुअल इमेज में हम चेंजेस नहीं कर रहे। एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट होता है सीपीआई, कंटेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? क्या करता है ये? कंटेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल नहीं, कंटेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सेज कि आई रिट्रीव द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट, what is there as the content I will identify. Correct? Like suppose I have given the content as Qutub Minar. Okay. So I will get a lot of videos, a lot of images, and from that it will retrieve only Qutub Minar, not a tower. ठीक है? Not a long building. बुर्ज खलीफा को कुतुब मीनार से कंफ्यूज नहीं करेगा। It will identify the objects in the image, content based information retrieval. So and it is also it is going one step ahead using LLM, large language models, and it is saying that okay, you retrieve the content of the image and then you specify it in terms of sentences. कि this particular image, suppose मैंने यहाँ की फोटो क्लिक करी, so there were 3, 6, 9 people sitting, out of which there were 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 females and 1 male, and 1 male was wearing white color dress, 1 female was wearing red color dress. इस तरीके का description is content based information retrieval. इसको जो कैप्चर आता है कि recognize the motor bike, so that is the content. Yes, you can say. कैप्चर में आता है कि find out the traffic lights आप पहचानना। So that is content based. And जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि there are 7 faculty members, out of which there are 6 ladies. There is 1 gents. He is wearing a white shirt. He is wearing a red dupatta. This is all content based. What is the content of my image? Okay. So content based information retrieval is one research topic that you can work on. And nowadays we are talking about LLM, large language models. Any idea about this? What is a large language model? NLP किसी की है क्या कोई रिसर्च फील्ड? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है आप लोगों की रिसर्च फील्ड? रिसर्च फील्ड डेटा माइनिंग नॉट येट स्टार्टेड, तो स्टार्ट किसमें करोगे? और किसी की कोई? Blockchain. Okay. What are you doing on blockchain? Healthcare. That is domain. Security to the healthcare data. Okay. And what do you do in data mining? Data mining is You have already done your PhD, ना? हाँ, इस पर आपसे बात नहीं। जिसने नहीं करी है वो बताए कि आप what do you want to work on? So all those who are looking for a research field, so diffusion models is one which has just come up, and diffusion models basically says कि how can I form an image out of text. Okay,
तो जैसे अगर मैंने आपको बोला कि एक देयर वाज अ टॉर्टोइस एंड अ हेयर व्हिच हैड अ रेस, इतना बोला मैंने आपको, तो आपके दिमाग में कुछ बना 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 होगा ना, एक हेयर भी आया होगा व्हाइट कलर का, एक टॉर्टोइस भी आएगा धीरे धीरे चलता हुआ ग्रीन कलर का है, और दे हैड अ रेस में एक जंगल भी बना होगा, आपके दिमाग में बन रहा है सब कुछ, बना कि नहीं बना, बना। इफ आई से एन ऑरेंज, दिमाग में बना ऑरेंज, हमेशा बनेगा, कुछ भी सोचो हमेशा बनेगा। इफ आई से आईफिल टावर, आपका आईफिल टावर भी दिमाग में बनेगा, हमेशा बनेगा। That's why we are but if I say Eiffel Tower, still you are having an image in your mind. That is known as diffusion. That's why we are understanding. We are talking about the Eiffel. Exactly, we are talking about Eiffel Tower. Yes. So diffusion model says कि जो हम काम कर रहे हैं, that we are making the images in our mind. Even if we have, suppose you have not seen Eiffel Tower ever in your life, but you have seen the images. So from those images only you are retracting the information, and then you are forming the image in your mind. So I want my computer also to do the same. As soon as I say a hare and a tortoise had a race, then it should build a hare, it should build a tortoise, and it should have a race. This is known as diffusion models. That is from text to image. Image to text is simple. That is known as annotations. So what I gave you an example was annotations. कि whatever you had in the image, you gave in the annotations कि ये चीजें available थी image में, and accordingly you did that. Correct? But if I say the opposite of this, from the text to the image is a part of large language models, and we are doing it with the help of diffusion models. Another research field can be, let's say, large language models have now started giving you wrong information. ChatGPT सबने try किया. So does ChatGPT always give you correct results? No. Why? And in which cases it doesn't give you good results? Any example? कोड के समय में कोड जब कुछ डालते हैं उसके रिजल्ट्स कभी कभी करेक्ट नहीं आते हैं रिजल्ट, पर वो देगा जरूर, देता है, वो बोलेगा जरूर, भले उसे कछु ना आता है ना। हम बोलेंगे जरूर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में कि उनसे पूछो वाइवा के टाइम पे तो वो कुछ भी बोलेंगे, उनसे बोलो मसूरी क्या है तो दार्जिलिंग बताएंगे, बोलेंगे, वो बोलेंगे जरूर, ठीक। और कुछ तो मसूरी बोल के कन्याकुमारी दिखाएंगे, मतलब दार्जिलिंग तो चलो फिर भी ठीक था, दोनों हिल स्टेशन थे, बट someone will tell you about कन्याकुमारी also. So that is what ChatGPT is also doing. ChatGPT, if it doesn't understand, efficiency तो is one thing, that is accuracy, but the other point is it will give you wrong results, and that is known as hallucinations. So in LLM, it is facing a lot of hallucinations because it has started assuming the data. So even if it has not seen or heard or listened about that data, it will start forming stories about it. ठीक है ना। तो जैसे मैंने उससे पूछा फॉर एग्जांपल आईफिल टावर पूछा, अब आईफिल टावर के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो बस वो टावर से जोड़ के कुछ कुछ बना देगा, तो दैट इज नोन एज hallucination. So again this is another research field in which a lot of work is not started as yet. अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, इस पे बहुत जरा सा काम हुआ है, which we are trying to remove the hallucinations from LLM models, large language models, in order to get the correct information. Okay, so this is also a part of natural language processing, or you can say LLM models. I think थोड़ा सा implementation देखना है, करोगे आप लोग साथ में, करोगे, कंडीशन लिखो नहीं, करोगे ना सब लोग, ठीक है करते हैं। एक आप लोग काम करो, शायद जुपिटर इंस्टॉल नहीं होगा आपके सिस्टम्स पे, तो जस्ट गो टू कोलैब, आप नेट बताओगे क्या मुझे?
इंटरनेट की डिटेल्स वाईफाई में आपको कनेक्ट करूँ किससे स्टूडेंट्स आईडी से लॉगिन करते हैं हाँ मुझे लगा नहीं तो किससे करूँ पीसी नहीं कर दो उसको कोलैब पे लॉगिन करिए अपने जीमेल क्रेडेंशियल्स के साथ एंड देन कम टू वेलकम टू कोलैब जस्ट गिव योर जीमेल क्रेडेंशियल्स Either you go to Jupyter or you can do it on Colab. It will look like this. एक साइट होती है kaggle.com. You must have heard this word. And this is a very beautiful site. It has lots of data and lots of code also. So suppose if I want to work on skin cancer detection. So you'll get the skin cancer data set from here. It's a 3 GB data set. So it's a huge data set. When you're talking about skin cancer detection, so it will actually give you the images, like these are the images of the skin cancer. So there would be some normal images and some would be affected images. Anyone can give me the words for that? Normal and affected? Benign or malign? Malignated, you can say. So benign would be some normal images which doesn't have any disease, or there would be certain images which may have the disease. Correct? So this is a complete data set for that.
And if you go down, you may get the codes also for it. See, you may get the codes also for it. So this is skin cancer prediction using CNN, using the same data set. This is one code using CNN with the same data set. Just go to Kaggle and try it out. And if suppose I am going for linear regression, so this is a car price prediction. I am trying to predict the price of the car on the basis of certain parameters. What are the parameters? I can check it out from the data. So you just click on edit my copy. You need to log into Kaggle to use it. Please make a login, register on Kaggle if you are not there. And you would have the complete code here. कार प्राइस प्रिडिक्शन आप लोग सब लोग यहाँ पहुंच जाएंगे फिर विल प्रोसीड फर्दर. कार प्राइस प्रिडिक्शन Kaggle kaggle.com kaggle.com. मिल गया सबको कार प्राइस प्रिडिक्शन और उसमें लीनियर रिग्रेशन लिखा है. यही वाली आप नोटबुक खोलिए. कार प्राइस प्रिडिक्शन लीनियर रिग्रेशन RFE. Everybody got that? So I'll tell you the complete process how to use this code for your own self. ठीक है ना. अब आप इससे पेपर तो पब्लिश नहीं कर सकते हो for sure because the code is already there. So you cannot use this code for your paper publication, but you can take the help of this code to write your own code. ठीक है ना. आप इस जो भी ऑथर है उसको एक्नॉलेज करिए पेपर में and you can use this code, change it for yourself and then you can use it for yourself. Correct? You cannot use the direct code. तो अगर आप लिखो car price prediction using CNN, your paper will get rejected because it's already there. Correct? It's not a new thing that you have done. So car price prediction. और जब आप इसकी edit my copy में जाओगे, edit my copy, you will come here. You will be able to see the complete code. Edit my copy. Edit my copy. हाँ, इस पे क्लिक करो. हाँ, ऐसे. Got it everyone? Edit my copy. सबका चला. ठीक. Go to file. Download the notebook. Download the notebook. So you will have the IT by NV file of this code. Download the notebook. File. Download the notebook. Done. Here is your data. Just click on card price assignment.csv and here would be your data. So if you go on the right hand side, you will see this download button. Click on that data first. Click on the data and go at the bottom. Go at the bottom and on the right hand side you would see this download button.
Download the data also. Registration completed. Madam, unless and until we register, we will not get the download option. I don't think so. We are not getting the download. You have to register with the Gmail, na? Yes. Simple Gmail. No, madam, without registering also. It is getting over. Yeah. नहीं आपकी I-25 ठीक से नहीं आई है. आपने नोटपैड पे खोला है क्या? हाँ शायद इससे. ठीक. राइट में. वो on the right hand side. सबसे नीचे जाएंगे. Have you downloaded the IIT and the data? Hyperlist कर दो. Data download करो. इनको बहुत ऐसे. ये टेस्ट है. नहीं इधर से पूछ रहा हूँ. साइन करना. साइन में गूगल कर लीजिए. आपको पता नहीं है. नहीं Sir, file. File. Sir, ऊपर का icon, file. Give background to IIT फाइल और CSV फाइल दो डाउनलोड कीजिए. ओके गॉट इट कर दीजिए. आई थिंक सब आपको राइट में सब करेंगे. ऐसे करेंगे. वो ओके गॉट इट का एक नीचे टैब होगा उसको ओके गॉट इट कर दीजिए तो यू विल सी दैट डाउनवर्ड एरो. जब ये डाउनलोड कर लीजिए आप कार्ड प्राइस अंडरस्कोर असाइनमेंट. तो मैं जुपिटर में और कोलैब में दोनों तरह से दिखाती हूँ. इफ यू आर डूइंग इट ऑन जुपिटर you simply say upload and give the link of your file. Here a card price, linear regression. If you are doing it on Jupyter, Anaconda Jupyter में कर रहे हैं तो आप अपलोड करो और उस IIT फाइल को यहाँ पे अपलोड करो. If you are doing it on Colab, you simply say file, open the notebook. Open the notebook and you will have the option of here it is, upload. Browse and give the link of the file.
वो आपका आपका हुआ ऑलरेडी एग्जिस्ट करके बोल रहा है और आगे भी है और पासवर्ड याद नहीं है मैं आगे ही नहीं मेरा पासवर्ड मैम सर आपने स्पेस दिया होगा स्पेस अभी लो नहीं स्पेस अभी अब नेक्स्ट करिए कब का बन चुका है आप अपनी मेल पे चेक करो आ गया होगा डिटेल्स इनबॉक्स करिए नहीं वापस से आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं कंप्लीट ठीक है नेक्स्ट करो पहले स्पेस है एक स्पेस चेक करिए आपने अच्छा आपकी यहाँ पे स्पेस है एडिट करिए इसीलिए कोई एरर है आप यहाँ से भी हटा दो अब नेक्स्ट द यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन ये किसने दिया हुआ है एडिट करो और दूसरा यूजर नेम दे दो ये तो बहुत ही कॉमन है कुछ दूसरा दीजिए जो मिले ना किसी ये भी मिल जाएगा ये अपनी ईयर और वर्ड डाल दीजिए अब नेक्स्ट लीजिए यहाँ पे आप कोई पूरा कार प्राइस प्रेडिक्शन लेके सर्च करिए आईटी बैंक में फाइल और उसका रेट कोलैब में आपने किया हो गया हाँ आपका ठीक है वेरी एबल टू अपलोड ओपन की हाँ ब्राउज कोई भी अपने आप डाउनलोड में चली जाती है नहीं देखो पूरा पैकेज नहीं नीचे तो अपना डेटा सेट है सीएसवी फाइल है फाइल डाउनलोड इसको बोला अच्छा बोला आप अपलोड करो कार प्राइस प्रेडिक्शन डॉट आईपी का एमपी फाइल होगी जो आपने खोली ना एरर के yes 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 you can आईपी तो पहले वो डाउनलोड करिए दो चीजें आपको डाउनलोड करनी है डाउनलोड नोटबुक और डाउनलोड सीएसवी फाइल दो चीजें डाउनलोड करिए सीएसवी फाइल इज योर डेटा सेट और आईपी फाइल इज योर कोड है वो हाँ आपने कोड अपलोड कर दिया आना चाहिए कि नोटबुक नाम क्यों आ रहा है कार प्रेडिक्शन का नाम आना चाहिए देखो देखो आई एम टेलिंग द कंप्लीट प्रोसेस अगेन प्लीज लुक इट ओवर हियर सो जब आप कार प्राइस प्रेडिक्शन पे जाते हो कैगल में यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया पहले कार प्राइस प्रेडिक्शन सर्च किया ठीक ये मिली मुझे आई सेड एडिट माय कॉपी
किया है पाइथन ने, आई जस्ट गो टू फाइल, download the notebook. So if you click on download the notebook, it would be a car price prediction linear regression rfv.ipynb file. notebook.ipynb फाइल नहीं होगी, कुछ लोगों की है जैसे, ऐसा क्यों आ रहा है आई एम नॉट श्योर, बट इट वुड बी अ कार प्राइस प्रेडिक्शन लीनियर रिग्रेशन डॉट ipynb फाइल. दिस इज योर पाइथन कोड. इस कोड में ये डेटा सेट है, डेटा सेट मतलब डेटा, ठीक. उस डेटा को आप क्लिक करोगे, यू गो ऑन द राइट हैंड साइड, इस बार को आपको लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, राइट करोगे तो ये डाउनलोड बटन है. इफ यू क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन, योर डेटा सेट वुड बी डाउनलोडेड. क्लियर everyone now? So there is a CSV file and there is an ipynb file. ipynb file is the code, CSV file is the data. अब आप कोलैब में जाओ, you go to कोलैब, फाइल, अपलोड, ब्राउज एंड गिव द लिंक ऑफ योर फाइल. मेरी डाउनलोड्स में है वो फाइल, car price prediction dot ipynb. So I'll just open it. This is my file. आप लोग की भी यही खुली है ना सबकी? अच्छा, इस तरह से आपका कोड खुल जाना चाहिए यहाँ पर. ठीक. अब इस कोड को चलाने के लिए आपको डेटा चाहिए. डेटा कैसे अपलोड करोगे, ध्यान से देखना एक बार, फिर उसके बाद करना. प्लीज ध्यान से देखना. क्लिक ऑन दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, फाइल्स. जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन दिखेगी. वेट फॉर सम टाइम. फिर जब ये बटन दिखना शुरू हो जाए, सब लोग ने देख लिया? जब ये बटन दिखना शुरू हो जाए, क्लिक ऑन दिस एंड देन गिव द लिंक ऑफ योर CSV फाइल. ऐसे आपसे वो वार्निंग लेगा और यहाँ पे ये टाइम लेगा थोड़ा, और फिर उसके बाद ये फाइल यहाँ दिखने लगेगी. यहाँ दिखने का मतलब है कि यू हैव अपलोडेड योर डेटा सेट ऑन कोलैब टू बी यूज्ड. ठीक, इतना करो. और जो लोग जुपिटर पे कर रहे हैं वो एक बार जुपिटर पे भी देख लें. कोई कर रहा है क्या जुपिटर पे? नहीं. डन. डेटा अपलोड हो गया सबका. अब ये सारा कोड है पाइथन का, बस यहाँ पे इसको मॉडिफाई करो. ये जो कहानी लिखी है ये सारी डिलीट करके बस इतना छोड़ो, बस. जहाँ पे आपके फाइल का पाथ दिया हुआ है वहां, एंड नाउ यू जस्ट एग्जीक्यूट एवरीथिंग. पहले इंपोर्ट सारे एग्जीक्यूट करो. पहली बार करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम. सो यू विल बी एबल टू सी द फाइल हियर. एंड नाउ वंस यू हैव द डेटा विथ यू, यू हैव द कोड. आपको जो मन है उस कोड के साथ खेलो. लीनियर रिग्रेशन के बदले एसवीएम लगाओ, एसवीएम के बदले कुछ और लगाओ. यू कैन डू एवरीथिंग. कहाँ अटके हो? ये करते हैं सेम में बस इसमें जाके नीचे डेटा का पाथ चेंज. ये सारा ये सारा चीज बता दो. No, everything will execute. बस अब एग्जीक्यूट करते हैं.
It's good connected. Play करेंगे यहाँ पे फिर नहीं ये हाँ इम्पोर्ट करेंगे ऑर्डर से एग्जीक्यूशन करिएगा पहले इम्पोर्ट वाला पार्ट फिर नीचे वाला CSP नहीं या आप गूगल से साइटेशन ये 4 लोग हैं तो मैं पूरा दो और हमारा कभी अब यहाँ किसको अपलोड करिए हो गया सबके हेड चला हेड डेटा का हेड अगले 12 घंटे मेरे इसमें जाते हैं इस काम में 7 से 6 वीडियो 7 से लेवल है आपका कुछ मॉडिफाई हो गया जितना पढ़ा रहे हैं ये दूसरा बता ये चीजें पढ़नी है जैसे ये की वेबसाइट उसकी वीडियो दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं कोडिंग सिखाती है जो वेबसाइट बनी हुई है उसको यूज कैसे करते हैं जैसे पूरा कोड नहीं चलेगा कभी भी कुछ ना कुछ लास्ट में जाके एरर आएगी ही आएगी अगर पूरा कोड चल जाए तो मतलब क्या है कहीं ना कहीं लास्ट में जाके एरर आएगी क्योंकि पूरा कोड कोई भी नहीं डालता अन्यथा उसको यूज कर लो बट दिस इज द वे हाउ यू कैन स्टार्ट योर पार्ट आपका कोड का स्टार्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली एज व्हाट यू नीड तो एटलीस्ट यू डोंट हैव टू राइट द कोड बाय स्क्रैच है ना सबका हेड दिखना चाहिए shape is what is the size of your data so it has 205 rows and 26 columns describe will tell you the details इसका percentile max min values info will tell you the data types और ये data cleaning part pre-processing unique वगैरह वगैरह ये सारी चीजें you do all these things for pre-processing of the data cleaning of the data pre-processing of the data and once all that is done then you build the model अब इसमें ये डमी वेरिएबल्स हाँ ये है ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट ये ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट वाला पार्ट है जिसमें आप डेटा को स्प्लिट कर रहे हो 70% डेटा स्प्लिट किया है 70% फॉर ट्रेनिंग एंड 30% फॉर टेस्टिंग दिख रहा है हाँ 70% फॉर ट्रेनिंग एंड 30% फॉर टेस्टिंग फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन किया है इसको स्केलिंग करी है और ये लीनियर रिग्रेशन फिट किया है यहाँ पे मैंने बोला मॉडल डॉट फिट it has only one line and in one line the complete linear regression goes at the back end तो आप सिर्फ इतना लिखते हो और आपकी पूरी लाइन ऑफ रिग्रेशन बन जाती है so it's only one line code in which you are completely executing the linear regression और एक ही लाइन कोड से SVM भी हो जाता है डिसीजन ट्री भी हो जाता है रैंडम फॉरेस्ट भी हो जाता है सब कुछ हो जाता है and then this is building the model 4-5 मॉडल्स उसने बिल्ड किए हैं एंड एट द लास्ट टू गिव द इनपुट सिंपल तो कुछ पोर्शन आपका कोड का चलेगा कुछ नहीं चलेगा एंड दैट यू हैव टू रेक्टिफाई एंड मॉडिफाई इट विद योर ओन कोड कि आपको लीनियर रिग्रेशन नहीं करना है सपोज पॉलिनोमियल रिग्रेशन करना है तो आप उसका फॉर्मूला वहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए तो एटलीस्ट दिस कंप्लीट प्रोसेस विल नॉट मेक यू नेसेसरीली स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच you have your code you make the modifications of the code and you can use it for yourself okay I hope it's pretty okay now Yes. thank you so much
For your patient listening, मुझे जेल लगेंगे. Thank you so much. नहीं बहुत सारे डाउट्स थे मैम ने क्लियर Thank you. क्योंकि टेस्ट एंड ट्रेनिंग का तो कोई पार्ट वैल्यूएशन Validation. वेरी डीपली एक्सप्लेन द डिफरेंस मैं email ID अपनी share करती हूँ. So if you have any doubts that can be cleared, Pooja, Jain at IIITm.ac.in. आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है ना विद रियल टाइम एग्जांपल्स. Thank you. Thank you. I am blessed. मैम ट्रिपल आईटी N भी आएगा. IIITn.ac.in. Yes, thank you, ma'am. Thank you. Sharing your knowledge. पूजा जी एक्चुअली नहीं, Pooja Jain at IIITm.ac.in. Thank you, ma'am, for sharing your knowledge on supervised machine learning algorithm. You made this as rewarding and great learning experience for all the participants. So, to felicitate our resource person, Dr. Pooja Jain, ma'am, I request Dr. Pooja to offer the memento as a token of love and remembrance. Thank you so much.